Good morning, students. Yesterday we discussed about the principles, four principles given by the F.W. Taylor. Now we're going to start the techniques of scientific management. Principles were very less of this F.W. Taylor, but their techniques are very much important given by this Frederick Winslow Taylor. You need to have a very deep study about these techniques because one of technique itself is a lengthy and very important from the board perspective. Number one technique which is known as functional formation. Very much important thing which needs to be taken care in your mind is that कि हम लोग जो भी टेलर के टेक्निक्स में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड टू शॉप फ्लोर पे रहेगा, प्योरली बेस्ड ऑन दी वर्कर्स. उसका जो मेन फोकस था दैट वाज एट द ऑपरेशनल लेवल, दैट वाज एट द वर्कर्स लेवल, दैट वाज एट द लेबर लेवल, वेयर द एक्चुअली प्रोडक्शन, वेयर द एक्चुअली गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू द फाइनल गुड्स. सो हेयर यू नीड टू टेक केयर कि पहली जो टेक्निक है दैट इज फंक्शनल फॉर्मेशन. फोरमैन हमने जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी डिस्कस्ड इट सेड दैट foremen कुछ नहीं है, these are those workers, those who are working at the lower level. तो functional foremanship ये कहता है फ्यूल के प्रिंसिपल्स में भी हमने स्पेशलाइजेशन स्टडी करी थी, पर टेलर कहता है कि अगर आपको प्रोडक्शन लेवल पर, अगर आपको शॉप फ्लोर लेवल पर, अगर आपको प्रोडक्शन यूनिट में, असेंबली लाइन पे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट चाहिए, तो उसके लिए आपको डिवाइड कर देना चाहिए आपका जो फैक्ट्री मैनेजर है. हियर द फैक्ट्री मैनेजर का मतलब है द मैनेजर हु इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन, कि जो आपकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, और जो आपके फैक्ट्री का मैनेजर है ही शुड मेक टू डिपार्टमेंट्स in the production level for the workers. One is planning officer and another is production officer. Planning officer के अंदर भी they would have the four sub parts, or you can say four division, further officers, further subordinates or further supervisors, those who are taking care of their respective job work. टेलर के प्रिंसिपल इस टेक्निक में यही कहना चाहता है कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाना है, कीप इट इनटू दिस फोकस वर्ड स्पेशलाइजेशन. वंस यू आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, योर एफिशिएंसी वुड इंक्रीज, एंड इफ योर एफिशिएंसी वुड इंक्रीज यू विल एबल टू अचीव योर टारगेट्स विद efficient and effective manner. Efficient as we have discussed that within a cost competitive manner. तो प्लानिंग ऑफिसर जो होगा he will only plan certain things, and production officer, how that will work, let's have a reading of this. Planning officer क्या? Planning means what is deciding in advance what is to be done. एक चीज को डिसाइड करना, प्लान फ्रेम करना कि कैसे काम करना है. So he makes 4 supervisors. उसने अपने नीचे भी 4 बंदों को हायर किया है. One is root clerk. रूट क्लर्क का काम क्या है? He will tell about the sequence. He will tell about the sequence of work. Sequence of work means route. For example, if I would say simple example कि मुझे यहाँ से if I have to go to the Delhi, then which route I would prefer? Either I go from via Patauti or via direct to this Dharoda and then will go to Gurgaon. So route is something that the sequence of work कि किस phase से कैसे कौन से sequences से हमें move करना है, that is the purpose of the route clerk. So जो route clerk का person होगा वो आपको define करेगा, वो आपको explain करेगा the sequence of work. Instruction card clerk, this is again important. Instruction card means he will be giving the information about the work, about the nature of the work. आपको एक कार्ड बना मिलेगा, उस कार्ड के ऊपर properly each and every description regarding your job work, regarding the nature of work, how that particular work is going to be done, that all necessary instructions will be mentioned in that particular card. Third is time and cost clerk. Now time and cost clerk. Yes,
अभी हम कोई गेम या कोई भी एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो देयर इज अ सर्टेन डिफाइंड टाइम पीरियड फॉर दैट पर्टिकुलर गेम। ऐसे ही कंपनीज में भी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, देयर इज अ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, मींस दैट पर्टिकुलर पर्सन will monitor the activities of the production to be completed in stipulated time, कि कितने टाइम पीरियड में, स्टिपुलेटेड और डिफाइंड टाइम पीरियड में ये काम खत्म होना चाहिए विद द कॉस्ट, जितना कॉस्ट एक्सपेक्टेड है, दैट इज द वर्क ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। देन यू हैव discipline. Discipline person, discipline clerk in charge, discipline supervisor in charge is only to monitor the things that everything should be done in disciplined manner. Everything is being controlled, everything is being performed in systematic manner, and even under the defined policies, defined rules, that particular things are going to be carried out. So he said कि हम लोगों को अगर स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाना है प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, तो ही शुड डिवाइड द डिपार्टमेंट्स इनटू टू मेजर डिपार्टमेंटलाइजेशन, दैट इज प्लानिंग ऑफिसर एंड प्रोडक्शन ऑफिसर। सो प्लानिंग ऑफिसर will only plan, he will only plan the activities. Route clerk in charge will give you the sequence of work. Instruction card clerk will inform you about the nature of the work. Every required instructions regarding to be performed for the work will be mentioned in that particular card. सब कुछ किसके लिए दिया जा रहा है? वर्कर्स के लिए। Time and cost clerk will give you the stipulated, the defined time period with the cost parameter कि इतने टाइम और इतने कॉस्ट के साथ ये पर्टिकुलर एक्टिविटी should be completed. Discipline means everything should be done in proper defined rules, defined in a systematic and disciplined manner. So this was the activity of the planning officer. Now come to the production officer. Production officer क्या करेगा? Gang boss, speed boss, repair boss and inspector. These are the further four supervisors which he have taken under him that will control how workers. गैंग बॉस, बेटा गैंग बॉस क्या होता है? गैंग बॉस, अगर हम कोई क्लास में भी कोई पार्टी या कोई फंक्शन करते हैं या कुछ भी है तो वी मेक वन ऑफ द पर्सन एज अ ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर क्या है? हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज टू बी टेकन इन अ प्रॉपर मैनर। ऐसे ही प्रोडक्शन में भी एक गैंग बॉस, गैंग बॉस मीन्स द लीडर ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अपने ही जो वर्कर्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ जो हमारे ऑपरेशनल मैनेजर, जो ऑपरेटर्स नीचे काम कर रहे हैं, उनके लिए गैंग एक लीडर बना दिया जाता है हु इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द होल वर्क ऑफ द प्रोडक्शन। देन वी हैव स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम है? यस, बिकॉज अगर हम लोगों कभी व्हेन यू विल बी ग्रोन अप एंड गोइंग टू वर्क विद द कंपनीज, यू विल सी दैट पर्टिकुलर मशीनरी की भी कुछ डिफाइंड स्पीड होती है, एंड इवन फॉर द मैन पावर ऑल्सो, इवन फॉर द वर्कर्स ऑल्सो, दैट दे नीड टू टेक केयर ऑफ द स्पीड। उनको एक डिफाइंड स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है। सो दैट पर्टिकुलर बॉस विल टेक केयर अबाउट दैट द वर्क इज बीन कंप्लीटेड इन दी डिफाइंड स्पीड। जितनी स्पीड, जितना स्पीड का पैरामीटर सेट किया गया था उतनी स्पीड में ही वो काम पूरा हो रहा है। देन रिपेयर बॉस, बॉस जो रिपेयर का बॉस होगा, he will actually controlling, he will actually checking that all the machinery, all the equipments जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही हैं, दैट इज अंडर दी वेल कंडीशन, प्रॉपरली काम कर रही हैं। ऑल द मशीनरीज, ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द टूल्स, दैट ऑल आर वर्किंग इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट। देन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर दिस इज नॉट एन इंस्पेक्टर, द पुलिस इंस्पेक्टर। In a company, in a production department, inspector means he is that person who actually measure your quality standard कि जो भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, जो भी पार्ट आपने मैन्युफैक्चर किया है, उसकी क्वालिटी को चेक करना, दैट इज द बिगेस्ट वर्क ऑफ द इंस्पेक्टर। He is the very important boss for the company because he is going to check your part to be matched with the quality standards. Standard means
जो टारगेट्स, जो स्टैंडर्ड आपने मेंशन किया था कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे अगर एक पेन मैन्युफैक्चर करना है, तो जब मेरा पेन, लेट्स कि पेन प्रोड्यूस हो गया, पेन पूरा रेडी हो गया, नाउ आई विल मेंशन सर्टेन स्टैंडर्ड्स। मैंने चेक किया कि कुछ कुछ स्टैंडर्ड मैंने इनिशियली सेट किए थे कि पेन की जो फ्लो है वो इतने ऐसे चलनी चाहिए, पेन का जो इंक है वो इतने टाइम में वो होना चाहिए, या उसकी बॉडी का जो लेंथ विड्थ जो है दैट इज बीन लाइक दैट। तो जो जो भी आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड में सेट किए थे उसको सेट करना, उसको मेजर करना, दैट इज द वर्क ऑफ द इंस्पेक्टर। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेटा देखो, ध्यान रखो, फ्योल में भी हमने सबसे पहला प्रिंसिपल किया था डिवीजन ऑफ वर्क, दैट होल वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स and it has to be shared, it has to be given to each and every employee as with respect to their caliber and interest। यहाँ पर भी टेलर ने भी वही बात करी है, बट इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज मच फोकस ऑन द प्रोडक्शन लाइन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो ये कहता है कि अगर आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन अवेल करना है, अगर कंपनी में आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, कॉस्ट कम्पिटिटिव मैनर में काम करना है, गोल अकम्प्लिशमेंट करना है, सो यू शुड डिवाइड योर फैक्ट्री मैनेजर को डिवाइड कर देना चाहिए डिपार्टमेंट्स को दो, दैट इज प्लानिंग ऑफिसर एंड प्रोडक्शन ऑफिसर, एंड दीज आर द फर्दर सब हेड्स they are created under them who is going to take care of the each and every job responsibility of the work, and that all has to be followed by the workers. So this is the first technique which name ki function wise फोरमैन के लिए मतलब वर्कर्स के लिए काम को डिवाइड कर, दैट इज द फंक्शनल फॉर्मेशन। So this is the first technique you have to read out, and then we'll move further for the second. Thank you.